हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली आई होप यू डूइंग वेल आज हम बनाने जा रहे हैं दिस इज़ अ वेरी डिलिशियस डिज़र्ट फ्रॉम कराची पर्टिकुलरली आई वुड से नोन एज चेरी क्रंच है जनाब बेशक इसके अंदर चेरी नहीं है लेकिन चेरी क्रंच है शादियों में बड़ा बनता है और बड़े शौक से खाया जाता है रमज़ान में ख़ासकर इसलिए बनाना सिखा रही हूँ कि आजकल हमारे यहाँ दस्तरखान पे मीठा होना ज़रूरी होता है हर इफ्तारी में सो ये मेरी फैमिली फेवरेट है दिस इज़ वन ऑफ माई फैमिलीज़ फेवरेट To start with, I am going to use whipping cream. आप चाहें तो दूसरी cream भी use कर सकते हैं, but the whipping cream actually gives a really nice texture and a really light and airy texture. तो वो जो कहते हैं ना एक बड़ी प्यारी सी अच्छी सी feel आती है मुंह के अंदर जब हम इसे खाते हैं तो वो basically whipping cream की वजह से होती है और उसके अंदर मैंने डाला है about 3 to 4 teaspoon of ground sugar. This is basically normal granulated sugar जिसको मैंने ground कर लिया powder कर लिया है. No icing sugar here. And then I have added a bit of vanilla paste. You can add vanilla essence है अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो वो डाल लें नहीं तो vanilla sugar भी आप यूज़ कर सकते हैं and then I'm just going to whisk it up till a very soft peaky consistency बहुत हल्की सी जब soft सी इसमें peaks बन जाए over whip नहीं करना otherwise वो granulated हो जाएगा और सारा dessert बर्बाद हो जाएगा so this stage is the key in the making of this dessert so as you can see it's really nice and fluffed up doubled in volume and that's it pretty much not any more than this इससे ज़्यादा मत और इसे whip कीजिए otherwise it will just go grainy then इसके अंदर you can add any homemade custard I was actually lucky because I could get the ready-made custard from supermarket मेरे पास पहले से मौजूद था तो मैंने बनाने की ज़हमत गवारा नहीं की otherwise it's a simple recipe for 500 milliliters which is basically आधा लीटर दूध और उसमें about 2.5 tablespoon of custard any flavor custard mango works really well or banana which is the authentic one so you can use that one otherwise just use the ready-made one I have got M&S custard available so there you go I'm just using the whole jar in this recipe and I'm going to mix it with my whipped cream very gently just fold करना है प्यार से हल्के हाथों से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कुश्ती करने की ज़रूरत नहीं है वरना ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और हमें फ्लैट बिल्कुल नहीं चाहिए हमें really fluffy चाहिए अब उसके बाद इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स आती हैं जो इसमें क्रंच लेके आएंगी द क्रंची एलिमेंट इज़ आई हैव गॉट सम ड्राइड फिग्स chocolate 2 types milk and dark coconut and crushed almonds flaked coconut cherries which are glazed or the glassy cherries as we call them and some walnuts and this is peanut brittle अच्छा अब crunchy element जो है आप चाहें तो normal पत बना के भी उसको कहते हैं ना पाकिस्तान में जो होती है गचक वो भी यूज़ कर सकते हैं but what I'm using actually the one with the peanuts in peanut brittle type वो और भी उम्दा texture देती है पाकिस्तान में तो नॉर्मली ऑब्वियसली कमर्शियल चीज़ है उन्होंने खाली चीनी पिघला कर ही उसको उसका कहते हैं ना कैरमल बना के डाल देना है क्रंच के लिए लेकिन ये ट्राई कीजिए बहुत मज़ा आता है इसमें ये बहुत टेस्टी बनती है सो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालनी है अभी बात ख़त्म नहीं हुई अभी और भी चीज़ें आनी है जेरीज एज यू कैन सी मैंने पहले ही बना कर रख ली थी उनको मैंने क्यूब कर लिया था तो वो बाद में आएंगी पहले हार्ड चीज़ चली जाएगी हाफ ऑफ द क्रंच आई एम गोइंग टू एक्चुअली पुट इन दिस इज़ बेसिकली क्रश्ड पीनट ब्रिटल एज आई मैंशनड अर्लियर तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे but be sure you're not going to be heavy handed with it next goes a full large can of fruit cocktail अच्छा इसको अच्छे से ड्रेन कर लें इसमें सिरप नहीं रहना चाहिए अदरवाइज आपका डिज़र्ट रनी हो जाएगा make sure it's really drained well next goes half of each jelly I'm using it's entirely up to you want to use one type of jelly or I just like it because kids are going to eat it so I try to make it a little bit colorful and this was one of the desserts let me tell you an interesting fact it was actually made on my wedding about 10 years ago मेरी शादी पे ये बना था और इतना पसंद किया गया था you won't believe कि कहते ना कि घर लाने की नौबत नहीं आई थी सब वहीं ख़त्म हो गया था और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद जो मुझे एंड में बाद में याद आया कि हमने तो इसके अंदर बनाना भी डालना था बनाना इज़ द ओनली फ्रेश फ्रूट आई एम एडिंग रीज़न बीइंग इफ़ यू एड एनी फ्रेश फ्रूट इन इट what will happen is there will be a lot of watery substance coming out of fruit as we know and then it will just make it too muddy and too not really nice to eat I would say texture ही नहीं अच्छा रहेगा ना तो उसके अंदर मैंने 2 firm bananas जो है वो finally not really finally अच्छे से काट के इसमें डाल दिए हैं
और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा कुछ एक दफ़ा डाल देते ना तो कड़मस मच जाना था और बहुत अजीब सा गंदा सा लगना था। सो गिव इट अ रियली नाइस जेंटल मिक्स एंड देन इन अ नीट एंड क्लीन bowl I would be just pouring in. अब ये मैं गलती करने लगी. I was going to dollop it in all of a sudden and then I was going to make a big mess. I was honestly really tired at this point because I was fasting and all everything was going on. इसको किसी अच्छे से छोटे से कप की मदद से एक अलग बोल में निकाल लें प्यार से. उसको just give it a few taps so any air bubbles come up and it's settled really nicely. Then I'm just going to sprinkle. As you can see, I'm doing it really rustically. I was in such a hurry. I'm just bunging everything on top of it and that's it. It's gone. I didn't have any space for the yellow jello so I have just left it. अब मैं इसके ऊपर अच्छा जब सर्व करना हो ना तब ये क्रंच डालें. Otherwise if you put this crunch beforehand it will just lose its crunchiness and become soggy and too much sweet. So it's already ready to go into the fridge for at least 2 to 4 hours or overnight. If you can serve it extremely chilled in your iftars or dinner parties or whenever you like. इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी. अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.